welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. नरगिस फाखरी अपने किस डिसीजन को करती हैं रिग्रेट? मुनमुन दत्ता ने सोशल मीडिया ट्रोलर्स को दिया जवाब. क्यों नेटिजन्स आमिर खान का बना रहे हैं मजाक? विद्युत जामवाल ने कंफर्म की अपनी एंगेजमेंट विद नंदिता मेहतानी. आमिर खान का कार्टून अवतार. नेटिजन्स हैं कंफ्यूज. आमिर खान ने चेस्ट के ऊपर तक पहन रखी थी जीन्स. आमिर खान के स्टाइल का सोशल मीडिया यूजर्स ने बनाया मजाक. तो करीना कपूर खान की ये एक्सपेंसिव 50,000 रुपीस की टी शर्ट भी नेटिजन्स को लगी शो ऑफ. आमिर खान और करीना कपूर खान को काफी वक्त बाद एक साथ स्पॉट किया गया. यहाँ ये दोनों किसी डिस्कशन में बिजी नजर आए, लेकिन लाल सिंह चड्ढा के स्टार्स के इस इंटरैक्शन की जगह इनके कपड़े सोशल मीडिया पर कर रहे हैं ट्रेंड. दरअसल आमिर खान का ये न्यू स्टाइल नेटिजन्स को समझ नहीं आ रहा. नेटिजन्स को लग रहा है आमिर खान का ये स्टाइल काफी ज्यादा फनी. और एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, Why is he wearing his pants on his chest? एक दूसरे यूजर ने लिखा, कार्टून कैरेक्टर प्ले कर रहा है. What the heck? वहीं एक यूजर ने तो करीना कपूर खान और आमिर खान की इस पूरे कॉन्वर्सेशन को कर लिया डीकोड और लिखा, Amir is telling Kareena to finish her coffee at her home only and not roam around showing off her coffee mug on the sets. इस पे Kareena told Amir to first wear his jeans on the waist, not on his chest, and then give instructions later. वहीं आमिर खान के एक फैन ने उनके इस लुक को डिफेंड करते हुए लिखा, People laughing about his pants are not aware that he's playing the role of Tom Hanks in Forrest Gump. It's a character. Read before commenting. Well, it seems आमिर खान का ये लुक उनकी फिल्म के एक पर्टिकुलर सीन के लिए ही था. Moving on, करीना कपूर खान की एक इंटरनेशनल ब्रांड की इस एक्सपेंसिव टी शर्ट को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही हैं. दरअसल करीना कपूर खान की इस ओवरसाइज्ड टी शर्ट की कीमत है 50,000 रुपीज. और नेटिजन्स को लगता है कि वो इस तरह की टी शर्ट 50,000 रुपीज में 500 खरीद सकते हैं. एक यूजर ने करीना कपूर खान की इस टी शर्ट को लेकर लिखा, इतने में तो 500 खरीद लूं. एक दूसरे यूजर ने लिखा, रुक जाओ भी, कुछ दिनों में लिंकिंग रोड में मिलेगा 200 में. वेल, सेलेब्स की फैशन चॉइसेस अक्सर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन ज्यादातर मौकों पर फेसेस की जगह सेलेब्स को इस तरह ट्रोलिंग का ही सामना करना पड़ता है. रूमर्स के बाद फाइनली विद्युत जामवाल ने एंगेजमेंट की न्यूज को किया कंफर्म. विद्युत जामवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नंदिता मेहतानी से एंगेजमेंट की न्यूज की अनाउंस. लेकिन 1 सितंबर को ही एंगेजमेंट करने के बाद विद्युत जामवाल ने क्यों 12 दिन बाद फैंस के साथ ये न्यूज की शेयर? क्या विद्युत जामवाल अपने रिलेशनशिप को रखना चाहते थे एक सीक्रेट अफेयर? एक्टर विद्युत जामवाल और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड नंदिता मेहतानी को रिसेंटली जब ताजमहल विजिट करते हुए किया गया था स्पॉट, तभी से नंदिता मेहतानी और उनकी एंगेजमेंट के रूमर्स सामने आ रहे थे. लेकिन इन रूमर्स को खत्म करते हुए ऑफिशियली विद्युत जामवाल ने नंदिता मेहतानी के साथ अपनी एंगेजमेंट की न्यूज अनाउंस करते हुए ये पिक्चर पोस्ट की है, जिसमें वो और नंदिता मेहतानी रैपलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. और अपनी इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए विद्युत जामवाल ने लिखा, Did it the Commander way, 1/9/2021. वहीं नंदिता मेहतानी ने भी इस न्यूज को ऑफिशियल करते हुए इसी पिक्चर के साथ कैप्शन लिखा, Couldn't keep him hanging any longer, said yes, 1/9/21. वैसे नंदिता मेहतानी और विद्युत जामवाल दोनों ने ही अपनी एंगेजमेंट की डेट को 1 सितंबर कंफर्म किया है. और सोर्सेज की माने तो विद्युत जामवाल अपनी एंगेजमेंट की न्यूज को तभी अनाउंस करने वाले थे
लेकिन एक पर्सनल लॉस की वजह से विद्युत जामवाल ने इस न्यूज को कुछ टाइम बाद अनाउंस करने का फैसला किया। पॉइंट्स जितने थे दिमाग में वो तो हैं, बता दिए। एवरीबडी शुड सेलिब्रेट हिज लाइफ बिफोर एंड आफ्टर। बहुत सही आदमी, लाइक अनबिलीवेबल, अमेजिंग। सो गाइज, यू गाइज हैव बीन अमेजिंग, आई लव यू। सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से यार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पहली बार किसी क्रिमेशन पे गया हूँ जहाँ पे मुझे लगा कि भगवान क्रीमेट हो रहे हैं। दिस गॉड लाइंग देयर, there were people with folded hands, sincerely. I felt very proud of you, Siddharth Shukla. कमाल किया तुमने यार, गर्व से कह सकता हूँ कि I love you. तुम्हारे लिए गाना बजाऊंगा मैं। वैसे अब जबकि ये न्यूज कंफर्म हो गई है, फैंस विद्युत जामवाल के सोशल मीडिया टाइमलाइन पर जमकर अपना प्यार दिखा रहे हैं फॉर देयर फेवरेट स्टार। रिपोर्ट्स के मुताबिक नंदिता मेहतानी और विद्युत जामवाल पिछले कुछ समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब फाइनली इन दोनों ने एक दूसरे को ऑफिशियली एक्सेप्ट करने का फैसला किया। वैसे विद्युत जामवाल की गर्लफ्रेंड नंदिता मेहतानी को जानने वालों को बता दें कि नंदिता मेहतानी फिल्म इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। वो इंडस्ट्री के रेनाउंड फैशन डिजाइनर्स में से एक हैं और उन्होंने कई बॉलीवुड सेलेब्स के कपड़ों को डिजाइन किया है। We wish Nandita Mahtani and Vidyut Jammwal all the best for their new innings. उदय चोपड़ा से ब्रेकअप के सालों बाद नरगिस फाखरी ने उनके साथ रिलेशनशिप को किया कंफर्म। उदय चोपड़ा को 5 साल तक डेट करने की बात नरगिस फाखरी ने की एक्सेप्ट। उदय चोपड़ा के साथ अपने रिलेशनशिप को छिपाने की बात को नरगिस फाखरी करती हैं रिग्रेट। नरगिस फाखरी का कहना है उन्हें माउंटेन टॉप पर चढ़कर उदय चोपड़ा के साथ अपने रिलेशनशिप को करना चाहिए था एक्सेप्ट। एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने अपने एक बोल्ड एंड बिंदास इंटरव्यू में खुलकर उदय चोपड़ा के साथ अपने रिलेशनशिप पर बात की है, जो अब तक सिर्फ एक रूमर के नाम से जाना जाता था। नरगिस फाखरी ने उदय चोपड़ा की दिल खोलकर तारीफ की है और ऐसा लगता है कि उदय चोपड़ा के साथ रिलेशनशिप में वो काफी खुश थी। नरगिस फाखरी ने उदय चोपड़ा के साथ अपने रिलेशनशिप पर कहा, Uday and I dated for 5 years and he was the most beautiful human I met in India. I have never said this to the press as people told me to keep my relationship quiet. But I regret that because I should have shouted from the mountain tops that I was with such a beautiful soul. The internet and social media is very fake and the people out there won't know what the truth is. Most often we idolize certain people who are actually bad behind closed doors. यानी अब नरगिस फाखरी उदय चोपड़ा के साथ अपनी फ्रेंडशिप को हाइड नहीं करना चाहती। वैसे नरगिस फाखरी ने अब ये भी कंफर्म कर दिया है कि वो जस्टिन सैंटोस के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं है। नरगिस फाखरी ने अपने ब्रेकअप की न्यूज को कंफर्म करते हुए कहा है, We have grown apart but we remain friends. वैसे नरगिस फाखरी काफी वक्त से यूएसए में रह रही हैं, लेकिन वो अभी भी अपने कुछ इंडस्ट्री फ्रेंड्स के करीब हैं और उन्होंने अपने उन इंडस्ट्री फ्रेंड्स का नाम लेते हुए कहा, I keep in touch with Varun, Dhawan, Ileana D'Cruz and Huma Qureshi, but mostly through Instagram. Recently when I was in Texas, I had lunch with Ileana. When Huma was in LA, we hiked together and had lunch too. वैसे नरगिस फाखरी इंडस्ट्री में फिर से वापसी करना चाहती हैं, लेकिन पैंडेमिक ने उनके प्लान्स को कर दिया आगे पुश। I actually left due to health issues, and when I wanted to return to Mumbai and start working again, the pandemic hit. As for the things that have been brought to light about the industry, it's about time. वहीं सोशल मीडिया पर कई बार नरगिस फाखरी को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनका ट्रोलिंग को लेकर फंडा है बिल्कुल क्लियर। She said, I don't really give it much attention. There will always be people out there who say negative things. I don't waste my energy thinking about them. Well, Nargis Fakhri अपने glamour quotient की वजह से इंडस्ट्री में थी famous. And if she decides to come back, उन्हें पूरी इंडस्ट्री करेगी welcome.
alleged girlfriend बबीता जी हुई नाराज। बबीता जी AKA मुनमुन दत्ता ने एज शेमिंग को लेकर ट्रोलर्स की लगाई क्लास। मुनमुन दत्ता ने कहा ट्रोलर्स ने उन्हें मेंटल ब्रेकडाउन के करीब पहुंचा दिया है। बबीता जी ने कहा उन्हें शर्म आ रही है खुद को डॉटर ऑफ इंडिया कहने में। रिसेंटली जैसे ही बबीता जी AKA मुनमुन दत्ता के अपने ही शो के एक्टर टप्पू AKA राज आनंदकट को डेट करने की न्यूज आई, सोशल मीडिया पर वो करने लगी ट्रेंड और मीमर्स ने सोशल मीडिया पर उन्हें एज शेम करना शुरू कर दिया। कुछ इस तरह के मीम्स हो रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा के स्टार जेठालाल का भी है जिक्र। लेकिन अब मुनमुन दत्ता AKA बबीता जी ने ट्रोलर्स को दिया है जवाब। लेकिन उनके इस पोस्ट से ये भी साफ है कि वो कितनी ज्यादा हर्ट है और यहाँ तक उन्होंने सिग्नल दे दिया है कि शी इज डिप्रेस्ड। मुनमुन दत्ता ने लिखा, टू द जनरल पब्लिक, आई हैड फार बेटर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, बट द filth that you have showered in the comment section, even from the so-called literate ones, proves how regressive a society we are. मुनमुन दत्ता ने आगे अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि किस तरह इंडिया में women को एज शेम किया जाता है। She wrote, women are constantly age shamed at the cost of your humor. Whether your humor drives someone to the edge of a mental breakdown or not is never your concern. 13 years of entertaining people and it didn't take 13 minutes for any one of you to rip my dignity apart. So next time someone is clinically depressed or driven to take their own lives, pause and think whether it was your words that drove that person to the edge or not. Today, I am ashamed of calling myself a daughter of India. मुनमुन दत्ता ने अपने इस पोस्ट में राज आनंदकट AKA टप्पू से अपने रिलेशनशिप को डिनाई नहीं किया और उन्हें किसी के ओपिनियन की परवाह नहीं। आपको बता दें, राज आनंदकट और मुनमुन दत्ता की एज में 9 इयर्स का डिफरेंस है और यही वजह है कि उनका सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जा रहा है। Coming up on the show, मुंबई डायरीज की स्टारकास्ट ने जूम से किया एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन। Hello and welcome to Zoom TV. I'm Parul Sharma and I hope you and your loved ones are safe and well. Today I have with me the stellar cast of the upcoming web show Mumbai Diaries 2611. Please join me in welcoming Natasha Bhardwaj, Mohit Raina, Mrunmayee Deshpande and Satyajit Dubey. Hi guys, how's everyone doing? Hi, Very good. How good, are thank you? So diving right in, as we know, Mumbai Diaries is a show that's a medical show based on the devastating terrorist attacks of 2611 that took place in Mumbai, right? I want to start off by asking you guys if you all remember exactly where you were and what you were doing on that day and when the news broke. In 2009, I was in Bombay. There was this place called Chakala in Andheri East. I used to live over there. I was in my second year college, and I had my dinner in the mess downstairs. And I came up, and all of a sudden, we got to know don't step out of your place, because at that point of time, nobody knew what exactly is happening. Whether it's a gang war or who's shooting who, it was not clear. Right. And the atmosphere was really tensed. It was extremely gloomy. And the next 3 days, we all know how it all unfolded. But the spirit of Mumbai is something which we all look up to. Right. And that's what the show is all about. I was in Pune, so I think I was in my college when the news came, and then we all were worried about Mumbai, obviously, and there are so many relatives who stays nearby. I remember calling them and asking them whether they are safe, whether they are at home, is there anyone near VT station or in Taj by any chance, but they all were safe. And yeah, it's the memory is, I mean, I don't want to remember that whole thing because it is stressful. It took so much from us, and yeah. Absolutely. But I was in Pune, so I was little away from all the chaos. Right. Yeah. Mohit, what about you? Well, I think irrespective of the fact wherever we were physically present, I think when anybody we came to know that the Mumbai was under siege, and a place which is a memorial place like Taj Palace, which is
It goes back in mid-90s. You know, so when it was taken under siege, I think everybody was taken aback and we were all shell-shocked. Nobody ever thought that Mumbai, a city which spirit is, you know, give an example of, I don't think anybody expected it to happen. And that too continuously for 72 to 100 hours. So I think, yeah, it is something that whoever has witnessed it or heard it or seen it will never forget. Right. It's true. That is so true. That because we all look up to the spirit of Mumbai and how Mumbai never sleeps, and that night was actually extremely terrifying. I was probably in the 7th or the 8th grade, and I don't know why this is funny. You know, she's time again making us realize that I am really a junior and you guys are senior. No, I'm not doing. So the first interview she started with, I was in 4th class, then it came No, to 6th class, and right now she's on 8th. Guys, can we just do the math? I was born in like 1997. So in 2008, how old was I? Acha. I was in the 7th, so I'm basically. like really bad at maths, so you're gonna have to tell me that. So please believe in Let's you. come back to the point. Believe that you were in Let's believe 7th, that. 11 years old. Done. Let's go with that. A toddler. So, but no, I mean, I mean, when I was really small at that time, and all I knew that it was like a really fearful atmosphere that had gotten created around all of us. And actually, my mom is a doctor, and she was working in one of the hospitals in town, and the commute from town to my place is probably like an hour. And I remember she called me before she left, and then she was in the transit, and there were all these scares that there might be explosive material even in the trains. Right. And that completely got to me because my mom was traveling by train at that time, and it took her 3 hours to reach, and I couldn't get through to her. And those 3 hours were the most horrific times of my life, because you instantly think of the first bad thing, especially when such a deadly situation is in the atmosphere. Absolutely. So she reached home after 3 hours, and I was just counting my stars that she's okay and safe and home. But yeah, that was my memory, and it still is extremely heart-wrenching. This show must then be really, really personal to you. And Absolutely. Yeah, and it must really have struck a chord. Yeah. If you could all give me a few lines just to dedicate to our professional frontline healthcare workers. Just thank you, because I think these words are most powerful, and it shows your gratitude towards them. So it's thank you. Yeah. I think आप लोगों के जज्बे को सलाम. आप लोग जो कर रहे हैं वो भगवान के बाद अगर कोई आता है तो those are doctors, and we are nothing without you. And in all the more in past 2 years we understood what the medical fraternity and the doctors and the hospitals they stand for. So my heartfelt gratitude, love and respect. What we have realized personally in the last year or so is how important and how respectful we should be to our medical fraternity and what we owe to them. Absolutely, exactly. They all should get a bravery award for their act of valor. This is what I firmly believe in. Such a thankless job sometimes for our medical fraternity or even our frontline workers, because we are not personally going through it. We are probably in our houses or in a relatively more comfortable space. They are out there, they are doing the job, and they are considered the closest to God, but they are human beings. And I think when I say we, I mean society, we just tend to forget that the human beings, they're leaving everything aside and taking care of what they can to their maximum potential. Because I think the spirit, the courage that a doctor has, it is beyond. I think you cannot fathom that. Thank you so much for joining me, guys. This was an absolute pleasure, and good luck to all of you. Thank you so much. Thank you so much.